And let's start with it's like kinematics, motion in one dimension, motion in two dimension. Yes or no? Here we'll also deal. Kinematics of circular motion means what are the parameters associated with when a body was moving in straight line. We're saying is a displacement, but when a body is moving in a circular path, that displacement will be saying it angular displacement. Let's say circular path. Body started from point A, reached at point B. Correct. So body displaced what? This is the angle. This is known as angular displacement. Rate of change of angular displacement is known as angular velocity, correct? And rate of change of angular velocity is known as angular acceleration, right? So let's go for number one. You know all the parameters, that is radius vector, okay? Right, radius vector. The line joining the center of, like, right, the line joining the center of rotation to position of particle. The line joining the center of rotation to position of particle in a circular path is called radius vector. It's called radius vector. That means if this is the circular path, this is the center, this is the position of the particle. Center to line, that is radius, is known as radius vector. Yes or no? It's next slide. Angular displacement. Next, right? Angular displacement. Angular displacement is what? As I told, yes or no? The angle turned by the radius vector in a given time interval is called angular displacement and denoted by theta, right? The angle turned by the angle turned by the radius vector, the angle turned by the radius vector in a given time interval is called angular displacement theta. It's called angular displacement and denoted by theta. It's called angular displacement and denoted by theta, right? ठीक है. अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं, let this the circle, the center, let body in A to B move किया, correct? This is point A, this is point B. The small angle subtended, that is d theta. Yes or no? And you also know that theta is equal to L by R. If radius is R, if the small length is L, then you can say d theta is equal to how much? Arc length by radius, yes or no? Arc length by radius. That is also known as d theta or theta. Very small angle we're taking because we will always define it to small angle, then we will expand it for the full cycle or the full circle, okay? And its SI unit will be how much? Radian. Its SI unit is how much? Angle ka radian, right? And small angular displacements are vectors. Large angular displacement are scalars. It's the don't obey the cumulative rule. And the direction of angular displacement is along the axis, okay, of rotation, and it is given by the right hand screw rule. Along the axis, right hand screw rule. You know, if this is the finger, right hand screw rule, yes or no? Encircled fingers body किस तरफ जा रहा है, and thumb जो है
दैट गिव्स द डायरेक्शनल वेक्टर, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो रेडियन की बात हो रहा है, you know angular displacement theta is equal to how much radian? When a particle completes one complete revolution, then angular displacement is theta, and that theta is equal to how much? 2 pi radian. You know this or not? When a particle completes one revolution, when a particle completes one revolution, right, that is known as, when a particle completes n revolutions, then angular displacement क्या हो जाएगा? अगर ये पार्टिकल n revolutions जाता है तो थीटा कितना हो जाएगा? That is 2n pi, मतलब n into 2 pi. Yes, that is the angular displacement. And when an object moves in a circular path at a constant speed, जब जब एक सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करता है, every time the speed changes but it is constant, direction of speed changes but it is constant, ठीक है। तो उसी मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं when an object moves in circular path at a constant speed, ये v जो है ना वो मेंटेन रहता है at constant speed, the motion is uniform circular motion. The motion is uniform circular motion. Uniform circular motion. Just write n revolution, that is n into 2 pi, okay. Theta is equal to 2n pi. Just write it. Next, let's go to angular velocity. Give hearing. Angular velocity denoted by the symbol omega, right? Okay. So that is the time rate of change of angular displacement, right? The time rate of change of angular displacement of particle is called angular velocity. Is called angular velocity, right? That's right. Students, अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल पे dt पे d theta angular displacement हुआ, then average velocity is equal to d theta by dt. Okay, we can write if delta theta, small angular displacement, is angular displacement in small interval of time, delta t, then average angular velocity omega average is equal to delta theta by delta t. Okay, as your rate of change of displacement is velocity, like that rate of change of angular displacement is angular velocity and denoted by omega, right? है ना? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, थीटा की यूनिट क्या है? रेडियन. टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. सो इट्स यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड. यस सर, नो? एंड फ्रेंड, अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करो स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस. थीटा हैज नो डायमेंशनल फार्मूला, थीटा इज डायमेंशनलेस, ओनली टी इज देयर. तो अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करूं मैं यहाँ पर, इफ यू विल बी सेइंग अबाउट डायमेंशनल फार्मूला,
So that is equal to time inverse, correct? Understood? And angular velocity जैसे कि मैंने बताया था कि axial vector है, its direction is given by right hand screw rule in the direction along the axis of rotation, है कि नहीं? Angular velocity की direction किस तरफ है? अगर axis of rotation ये है student, see, if this is the axis of rotation, right hand screw rule already मैंने vector पे बताया था आपको, this is axis of rotation, yes or no? And its direction is along the axis, ये axis, thumb इस तरफ, अगर body इस तरफ जा रहा है तो velocity का जो vector है, axial vector जो है, that will be along the axis of rotation, ठीक है? और student अगर एक body n revolutions बनाता है t seconds पे, then average angular velocity कितना होगा? एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई डिग्री, यस और नो? एक रिवोल्यूशन किया 2 पाई रेडियन, n रिवोल्यूशन किया 2n पाई, टाइम लिया t, तो हम लिख सकते हैं, we can generalize the thing as, right, when a body makes n revolutions, when a body makes n revolutions in t second, then its average angular velocity is, then its average angular velocity is, ठीक है, कितना होगा? ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? 2 n pi divided by t, correct or not? Yes or no? Yes, sir. Students, just write it. Students, let's find angular velocity of hands of a clock. Give heading. Angular velocity, right? Angular velocity of hands of a clock. Right? Angular velocity of hands of a clock, right? Students, अगर मैं second hand की बात करूं, एक चक्कर लगाने के बाद second hand कितना time जाता है? 60 second, right? And you know omega is equal to how much? 2 pi by t, है ना? Yes or no? एक चक्कर लगाया तो 2 pi Yes, sir. या t, so that is 2 pi 60 सेकंड, एक बार जब सेकंड हैंड घूम जाता है तो 60 सेकंड्स लेता है, तो उसको मैं लिख सकते हैं ना, that is the angular velocity of the second hand of a clock is pi by 30 रेडियन पर सेकंड, लिख सकते हैं कि नहीं? yes or no? Yes, sir. then angular velocity of minute hand कितना होगा बताओ? angular velocity of minute hand कितना होगा? जिससे एक, हाँ, एक मिनट हैंड जब पूरा घूम लेता है तो कितना होता है? 1 घंटा हो जाता है ना, Yes, sir. तो मतलब 60 into 60, right? Yes, sir. that is 2 pi by 3600, that is pi by 1800 radian per second, है ना? Yes, sir. Correct. Next, angular velocity of our hand. our hand क्या होगा? our hand 2 जब pi by 60 12 into to 60 12 into 60. 12 to 12 जब घूम लेता है तो कितना घंटा होता है? 12 घंटा होता है ना? Yes, sir. yes or no? तो हम लिख सकते हैं that is omega is equal to how much? 2 pi by 1 घंटा कितना? 3600, तो 12 into 3600, that is pi by 21600 radian per second. Getting it? Yes, sir. अगर अर्थ अपने एक्सिस के रोटेशन की तरफ हम निकालें 2 पाई, एक बार अगर अर्थ अपने एक्सिस की तरफ रोटेट कर लिया तो 2 पाई, और कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, है ना? सो दैट इज 2 पाई बाय 24, 60 into 60. तो अगर नेक्स्ट में मैं लिखूं इन केस ऑफ सेल्फ रोटेशन ऑफ अर्थ about its own axis,
about its own axis, ठीक है. There is omega is equal to 2 pi by 24 into 60 into 60 radian per second, right? Just लिखो इतना. सर सी, अगर एक सर्कल पे, ठीक है, दैट इज अ सर्कल, ठीक है, ये सेंटर है. मान के चलो एक टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर पाथ. एक ओमेगा बी है, यहाँ पर ओमेगा ए है. टू पार्टिकल्स, ठीक है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर पाथ इन सेम डायरेक्शन. दोनों इस डायरेक्शन पे ही जा रहे हैं, ठीक है. देन फॉर ए पर्सन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको क्या लगेगा, राइट? फॉर ए पर्सन, for a person at the center of the circle, for a person at the center of the circle, क्या होगा? Angular velocity of b with respect to a क्या दिखेगा उसको जो खड़ा है? That is omega b minus omega a ना? Relative velocity, yes or no? Yes or no, students? Yes, sir. And time taken by one particle to complete one rotation with respect to the another particle अगर निकालेंगे, if I'll be finding, अगर पूछा है time taken by one particle to complete one rotation, with respect to another particle, with respect to another particle is क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2 पाई by relative velocity. That means we will find omega relative, sorry, this is time period is equal to t pi by 2 pi by omega, right? So then we can write t is equal to 2 pi by omega relative, मतलब how much? Omega b minus omega a ना? Correct or not? Getting or not? Yes, sir, it is. स्टूडेंट्स, अगर उसी कॉन्सेप्ट को हम देखें कि दो कंसेंट्रिक सर्कल पे है कि नहीं, ये एक सर्कल है, जिस कंसेंट्रिक मतलब दो सर्कल है पर उसका सेंटर एक है, करेक्ट? कंसेंट्रिक सर्कल से ना, इसका रेडियस आर ए है. लेट एक पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, ऐसे वी ए स्पीड में जा रहा है, करेक्ट? और एक पार्टिकल मान के चलो सेकेंड सर्कल में जिसका रेडियस आर बी है और वो भी वी बी स्पीड में जा रहा है, करेक्ट है ना? टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूविंग इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, है कि नहीं, जैसे फिगर पे दिखाया गया है. इफ and they are very near to each other, तो अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, if I'll be saying about displacement r relative, so that is how much? rb minus ra na, correct? Yes or no? If I'll be saying relative velocity, then that is vb minus va, correct? Yes or no, students? है कि नहीं students? Yes, sir. Yes, sir. If I'll be saying about omega relative, students, v is equal to r omega. जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है कि नहीं, देख सकते हैं हम यहाँ पर आराम से. देखो स्टूडेंट्स, मान के चलो बॉडी यहाँ से मूव किया, इतना एंगल मूव किया थीटा, है ना? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? फॉर वेरी शॉर्ट एंगल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइक ना, सर्कल के एक छोटा सा ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह होगा कि नहीं? दिस इज सेंटर हो, है ना? एंड यू नो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब l by t लिख सकते हैं ना, v के बदले में लिख सकते हैं कि नहीं? We can write or not? If the particle is moving from A to B for a very small, this arc will look like a straight line or not? देखो एक सर्कल लिया मैंने, एक छोटा सा पार्ट में, इट इज लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन ना? Yes or no? Yes, sir. And that v is equal to displacement by time हमने ले लिए. And you know theta, that's angular displacement, theta is equal to also L by R ना? Theta is equal to L by R, arc length by radius, v is equal to L by t, correct or not?
Students, and what is omega? Omega is equal to theta by t, na students? Yes or no? Yes, sir. And theta is equal to हम डाल सकते हैं L by R by T, डाल सकते हैं कि नहीं? यहां से निकाला ना हमने थीटा, थीटा इज इक्वल टू L by R by T. Yes or no? Yes, sir. Then that is, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by R into L by T भी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. So that is equal to L by T is velocity ना, तो V by R लिख सकते हैं ना? You can write omega is equal to V by R, correct? Yes, sir. That means for small path V is equal to R omega, ये रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं हम. Yes, sir. Linear displacement is equal to linear velocity, right? There is linear velocity. V is velocity. Linear velocity is equal to, for small circular displacement, radius times of angular velocity. कर सकते हैं कि नहीं? We can write this relation or not? बताओ. So omega is equal to V by R ना students? तो finally यहाँ से हमें क्या मिला? Omega is equal to V by R, correct? Yes or no? Yes, sir. So then I can write omega relative is equal to relative angular velocity is equal to relative velocity by relative radius. Yes or no? Displacement, correct? So that means VB minus VA divided by RB minus RA. कैसे हम लिख सकते हैं ओमेगा रिलेटिव, करेक्ट और नॉट? Getting na? Understood or not the relation? Next, let's go to angular acceleration. Displacement पढ़ लिए, velocity पढ़ लिए. Next चलते हैं angular acceleration. मतलब rate of change of angular velocity is angular acceleration. Yes or no? So right, the time rate of change of angular velocity of a particle is called angular acceleration. It's called angular acceleration, right? Friends, अगर उसने डेल्टा ओमेगा चेंज इन angular velocity is delta omega और delta t पे उसने किया, so we can write average angular acceleration, right? Average angular acceleration is equal to alpha average, alpha में उसको डिनोट करते हैं d omega by dt, rate of change of angular velocity, right? है ना? डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं alpha is equal to d omega by dt. And student, what is omega? Omega is d theta by dt ना? Yes or no? So हम लिख सकते हैं d square theta by dt square लिख सकते हैं ना? As you are writing, and the linear acceleration is equal to velocity by dv by dt, and you are also writing d square s by dt square. Yes or no? Yes, sir. Like that you can also write alpha is equal to d omega by dt and d square theta by dt square. लिख सकते हैं कि नहीं? और स्टूडेंट यहाँ पर देखो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. अगर मैंने एक डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, एक डी थीटा डिवाइड कर दिया, तो अगर रीअरेंज कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा ना, करेक्ट? यस और नो? सो यू कैन राइट अल्फा, और ये डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा और नॉट, सो यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू आल्सो ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा. ये भी लिख सकते हैं. याद आ रहा है? इस तरह भी हमने किए थे. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी. यस और नो? और हमने एक ds मल्टीप्लाई किए थे, एक ds डिवाइड किए थे, फिर रीअरेंज करके लिखे थे ds by dt into dv by ds. Yes or no? That is acceleration is equal to ds by dt is velocity, velocity to dv by ds, correct? Yes or no? समझ पे आ रहा है ना? Yes. Just note it. Sir. କୁହ. ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ ଅଛି? ରାତିରେ ପଢିଦବା ନହେଲେ 9:15 ହେଲା.
ठीक ଅଛି ରଖୁଛି ତାହେଲେ सर କୁହ सर 9:15 ରେ ମୋର ରାତିରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କଣ ଅଛି सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। ହଁ ହଁ सर 9:15 ରେ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଦେଖିବ ନହେଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ପକଉଛି ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସର। ରହିଲେ